everyone, I am Indian Soul in Europe and today I want to wish you very happy Diwali from me, and today we are going to do a very nice unboxing, that is ta-da! तो न सिर्फ हम लोगों की तरफ से, आपको TRS की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. So what was there in the packet? Here is chickpea. This is an apron, a bag. These are very beautiful 5 diyas that are there. See how beautiful is that? And there is one more. You see this shape, how beautiful. Then there is some urad dal. These are some pamphlets that I am going to read afterwards. Cloves, green cardamom. These are the essential when you are cooking for festivities. Ginger and garlic paste, ghee, garam masala, cinnamon powder, and fennel seeds. And this is TRS gram flour. So I also got this pamphlet which says heartfelt greetings to you. We at TRS. Heartfelt greetings to you. We at TRS are wishing you and your loved ones happy Diwali. Happy Diwali. Aww. As a token of thanks from us to you for your collaboration, we are giving away Philips electronic set worth €300. Wow. And 30 TRS gift baskets worth €30 each. Wow. You and your audience can participate to win this competition by scanning QR code below. When you post about this competition, make sure to tag us, okay? We hope you make some flavoursome dishes with our wide range of spices, lentils and other ingredients. Yes, I did. I am going to show you soon. Have a wonderful time during Diwali festivities with the people you love most gathered around you. Kind regards with freundliche Grüße, and there are many other greetings in different languages. See, and here is the QR code. I will make a picture and put the QR code there. तो ये है हमारी नाश्ते की थाली. ये जो है ये है बेसन के लड्डू. ये जो है वो बेसन की सेव है. ये जो है वो कम शार्प है, मतलब कम तीखी है, जिसे बच्चे भी खा सकते हैं. ये मठरिया है. ये जो है वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था मठरी और सेव के, उसको मिला के एक भाकर बड़ी टाइप का बनाया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है. ये लास्ट 2 बचे हैं. ये जो है ये थोड़ा तीखी सेव है, और ये जो है ये है अपने सूजी के लड्डू. और ये सब चीज़ें बनाने के लिए हमें लगा था घी. मेन इंग्रेडिएंट है. सारी इंडियन मिठाइयों का एकदम शुद्ध देसी घी है. इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है. ये है कार्डेमम, मतलब इलायची, जिससे सारी मिठाइयों का स्वाद आता है. और ये है ग्राम फ्लोर, मतलब बेसन, जिसको जर्मन में बोलते हैं किखड़ेप्सेनमेल, एंड इट्स लिटरली अ सुपर फूड. करते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हम फिर मिलेंगे. बाय बाय.